The next thing we are going to see is splitting the data set. Okay. So in machine learning, we have three data sets that are commonly used while creation of the model. First data set is the training data set, second is the validation data set, and third is the test data set. So whenever you want to train any model, what you have to do is you have to initially feed your model a training data set. So uh, you can say there is a set of examples used to fit the parameters of the model. So model is trained on the training data set by using, here we are going to use supervised learning method. Okay. Uh, so whatever we are doing with our current model is we are providing a training data set with the to your model, and results we are comparing with the target. Whatever after training, whatever the result you are getting, you are comparing this result with the target. And based on the result of this comparison and specific learning algorithm, you're going to use the parameters of your model are being adjusted. Okay. So whatever the model you are creating, you can call it as a fitted model, and this fitted model is used to make predictions uh, based on the second data set called as a validation data set. So for validation data set, we are calling it as a biased evaluation. Validation data set provides you the sample of the data used to evaluate the model. Uh, or if you want to tune that model, or if you want to fit that model into particular features, you can use this validation data set. Means you can say that this model only sees the data. The model doesn't learn from the data. It means, yeah, this validation data set is affecting your model indirectly. You have a, what I told you, three data sets are there to train a model. Actually, while creation of a model, first is the training a data set. Training data set you feed to your model. It trains itself by using the training data set. Whatever the results you are getting, these results are compared with the target values you have already. ओके. सो अगर आपका लॉस फंक्शन आ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पैरामीटर्स एडजस्ट करने पड़ेंगे. तो ये वैलिडेशन चेक करने के लिए यू नीड अ वैलिडेशन डेटा सेट. ओके. तो आपको इवैल्यूएट करना है आपका मॉडल. तो फॉर दैट पर्पज वी आर यूजिंग द वैलिडेशन डेटा सेट. इट मीन्स योर मॉडल इज seen by the validation data set. Here you are not going to train your model, but validation data set indirectly affects your model. Next is the test data set. It provides unbiased evaluation of the final model. मतलब जो आपने ट्रेनिंग दिया है आपके डेटा सेट मॉडल को, तो उसका इवैल्यूएशन, अनबायस्ड इवैल्यूएशन करना है. Once your model is completely trained using your training data set and validation data set, it is provided to the it is provided, that model is fed with the testing data set. मतलब एक्चुअल टेस्टिंग आपका टेस्टिंग आपके मॉडल का टेस्ट डेटा सेट प्रोवाइड करके होगा. मतलब ये जो होता है ये अनसीन होता है. कंप्लीटली डेटा जो होता है अनसीन होता है. आपको आपने कुछ पार्ट ऑफ योर डेटा सेट यू आर यूजिंग एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट to train your model, and afterwards what you are going to do is you are dividing your data set into testing. That testing part is provided to your model, and you're using that testing part to check whether your model is correctly working or not. तो आपको क्या करना होता है, आपका डेटा सेट जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जनरली हम लोग. ट्रेनिंग, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग पार्ट में. ट्रेनिंग डेटा सेट मतलब आपका ओवरऑल डेटा सेट 65% ऑफ योर ओवरऑल डेटा सेट इज ट्रीटेड एज अ ट्रेनिंग डेटा सेट. 15% of your overall data set is treated as a validation data set, and 20% of your data set is considered as a testing data set. So you have to divide your data set accordingly. पहले आपको ट्रेनिंग डेटा देना है आपके मॉडल को, बाद में आपको वैलिडेशन डेटा देना है, एट द एंड आपको टेस्टिंग डेटा देना है. Okay.
So what you are doing, you are dividing your data set into three parts: training data set 65%, validation data set 15%, and testing data set 20%. Okay. Now you are splitting the data set. There are ways to split the data set. First is the overfitting, second is the underfitting. Okay. अभी क्या हो रहा है, आप डेटा ट्रेनिंग डेटा दे रहे हो आपके डेटा सेट को, तो overfitting occurs when model learns the training data to extent that it negatively impacts the performance of the model. मतलब it happens when your model feeds the data too well. बहुत ज्यादा ट्रेन कर दिया आपने डेटा को, डेटा आपने मॉडल को पर्टिकुलर डेटा के लिए, देन दिस ओवरफिटिंग हैपेंस. मतलब इसका ज्यादा ट्रेनिंग का इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपका मॉडल का निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है प्रेडिक्शन के ऊपर. जब कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स रहते हैं इन द एट दैट टाइम ये जो होता है ये ओवरफिटिंग ऑकर्स एक्चुअली. नेक्स्ट इज द अंडरफिटिंग. This occurs when your model cannot capture the underlying trend of the data. मतलब कुछ तो मिस हो जाता है डेटा में से और खुद को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाता है मॉडल. तो सर्टन पैटर्न्स ऑफ डेटा के लिए आपका मॉडल वर्क नहीं कर पाता है. दैट इज योर अंडरफिटिंग. मतलब आप जो अल्गोरिदम यूज कर रहे हो, पर्टिकुलर अल्गोरिदम आप ट्रेनिंग के लिए यूज करोगे, अगर वो अल्गोरिदम आपके मॉडल को फिट नहीं हो रहा है या फिर पर्टिकुलर डेटा के लिए फिट नहीं हो रहा है, इट डजंट गो विद दैट पर्टिकुलर डेटा वेल, देन अंडरफिटिंग ऑकर्स. मतलब सिंपल मॉडल, जब आप बहुत ज्यादा सिंपल मॉडल आप किसी भी सिंपल अल्गोरिदम आप किसी भी डेटा कॉम्प्लिकेटेड डेटा सेट के लिए यूज करोगे, in that case underfitting occurs. ओके. तो ये अवॉइड करने के लिए जनरली क्रॉस वैलिडेशन करते हैं हम लोग. तो वो जो हम लोग हमारे मॉडल के लिए यूज करेंगे क्रॉस वैलिडेशन, मतलब हम लोगों को सिर्फ दो इसमें डिवाइड करेंगे हमारा डेटा सेट. 80% हमारा ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा, 20% हमारा टेस्टिंग डेटा सेट रहेगा. It is but it is applied to multiple subsets, means we split out our data into k subsets and we are training our data into on k minus 1 of those subsets. मतलब whatever we are doing is we are dividing our data into k subsets and we are going to train our data into k minus 1 subsets. And the last subset for our data of our data, we are going to use it for the testing purpose. Okay, so what we are going to do is training and in this training and testing, we are dividing our data into parts. Okay, we will call this as a training part, validation part, and testing part. 65% of your data comes under your training part, 15% goes under your validation part, and 20% goes under your testing part. But whenever you are using simple algorithms, we can go for cross validation. Okay, it means 80% of our data we are going to use for cross validation and 20% of your data you're going to use for testing. It means you are going to divide your k data into some subsets, like k subsets, your data into k subsets. K minus up to k minus 1, you are using it for the training purpose, and kth subset you are going to use for testing purpose. So here, for Boston data set, what we are going to use during learning phase of this machine learning model,
we are going to estimate the target values by looking at the samples of the data set. And later, what we are going to do is we are going to verify the correctness of model by giving it some samples that will not be the part of data set, training data set. Okay. मतलब जब पहले हम लोग ट्रेन करेंगे डेटा को और बाद में करेक्टनेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे. जो टेस्टिंग पार्ट है वो टेस्टिंग पार्ट जो है वो हम लोगों ने पहले हमारे मशीन को दिया नहीं था. okay. सो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोगों के डेटा सेट को. सो वी विल हैव एक्स ट्रेन, एक्स टेस्ट, y train, y test. We are dividing our data set, x and y coordinates of our data set into training part, x train, y train, testing part, x train, y test, y test. Train, and we are using this train test split method to divide our data set. तो यहाँ पे हम लोगों ने split method use किया. टेस्ट साइज, टेस्टिंग साइज कितना है 0.2, मतलब 20% ऑफ आवर डेटा वी आर एलोकेटिंग इट टू द टेस्टिंग डेटा. 20% जो डेटा है वो हम लोगों ने टेस्टिंग डेटा के लिए एलोकेट करके रखा है. 0.2 मीन्स 20% ऑफ द डेटा इज रैंडमली सैम्पल्ड हियर. कोई भी रैंडम वैल्यूज 20% में आएंगे आपके डेटा सेट में से और वो रहेगा आपका टेस्टिंग डेटा. So after splitting the data, we are going to implement our linear regression algorithm over here. For implementing the linear regression algorithm, what we are going to do is we are going to use here gradient descent function. Okay. तो लीनियर रिग्रेशन मेथड क्या होता है, ये मेथड